Good morning, everyone. Good morning. Good morning. I hope you all can hear me. Nikun sir, I'll send you a request to join the stage. Please accept that. Can you hear me, sir? Yes, sir. You are clearly audible. Sure, sir. Good morning, everyone. Welcome to the last morning session of the week. Today we have two more sessions. I had a special session at 4 p.m. with with Arpit Beriwal sir and option strategies, which we use to trade in stock market. Hope you all are ready. The session will start at 4 p.m. The knowledge sharing will begin at 4:05. The session will end at 4:50, and then for 10 minutes we'll have Q&A. I hope you all are excited to be a part of the knowledge series because it's been a while. हमने ये last sessions किए थे ऐसे. And tomorrow at 11 a.m. we have candlestick. So good morning, Nikun sir. We will start with the options outlook and then with the stocks on radar, and then we are good to go. Sure. So good morning, everyone. Welcome to the final morning session of the week. That is a trading week, especially. And स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से. इंडेक्स अगेन नीचे 3 दिन का एक बाउंस बैक दिया आफ्टर शार्प करेक्शन. निफ्टी ने ऊपर से ऑलमोस्ट 24,800 से 23,000 का और लो किया है, ऑलमोस्ट 23,050 के आसपास. वहां से 3 दिन का एक पुल बैक रैली था which was short lived, and today आज थोड़ा सा नीचे है, लेकिन mainly courtesy of Reliance, which is up by 3-4%, which is trying to hold the fort for the bulls. And उसके सामने Infi and Axis, because of the Q3 numbers that they have announced, वो offset कर रहा है Reliance के gains को. So एक tussle है between these three stocks and the index itself. तो 3 दिन के पुलबैक के मूव के बाद थोड़ा सा वापस करेक्टिव मूव आया है, लेकिन नीचे की तरफ 23,000 जो स्विंग लो था, दैट इज वेरी क्रूशियल गोइंग फॉरवर्ड. अगर 23,000 के नीचे क्लोज होता है तो फर्दर वीकनेस टुवर्ड्स 22,800 22,600 आउट इन निफ्टी. वाइल ऊपर में एक जो गैप डाउन था वो कल गैप फिल कर दिया है, लेकिन ऊपर में 23,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है और सप्लाई जोन है. और जब तक 3,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, थोड़ा सा बायस नेगेटिव रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेटिव टू नेगेटिव सेल बाउंस रहेगा, क्योंकि ओवरऑल एक ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है. बट नीचे में अगर 23,000 होल्ड करता है तो पुल बैक मूव टुवर्ड्स 23,500 कैन नॉट बी रूल्ड आउट. बट एज वी कैन सी के क्वार्टरली अर्निंग सीजन हैव स्टार्टेड. तो पहले टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, और कल जैसे इन्फी, एक्सिस एंड Reliance came out with their numbers. So gradually we have Kotak over the weekend. तो जो numbers आएंगे उस तरह से stock specific move रहेगा, and the index would be reacting to these numbers. So एक stock 3-4% नीचे है, दूसरा ऊपर है, तो that would be the tussle between the two, and eventually the index would be managed in that way. तो नीचे में immediate point पे to make it more clear 23,000 एक support है. अगर वो ब्रेक करता है तो और 400-500 पॉइंट का करेक्टिव मूव आ सकता है निफ्टी. ऊपर में 23,500 का एक इमीडिएट हर्डल पॉइंट है. बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सेम 3 दिन का एक पुल बैक मूव था. आज कल का लो ब्रेक कर दिया है एंड इट इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स लोअर. तो 49,000 एक इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट था दैट वी आर वर्किंग विद, एंड आज 200 पॉइंट उसके नीचे है. तो इमीडिएट पॉइंट पे अभी 14 ट्रेडिंग पर से 49,050 और 49,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा, वाइल नीचे में सपोर्ट आएगा 48,200 एंड 300 के आसपास. तो ये 500-700 पॉइंट का एक रेंज है इन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी करेक्टिंग मेनली एक्सिस व्हिच इज लोअर बाय 3%, एंड HDFC Bank for some reason is not participating at all. Even if I show the HDFC Bank chart, एक करेक्टिव मूव आया था और पुल बैक भी हार्डली नेग्लिजिबल था. ऑलमोस्ट 1800 से द स्टॉक हैज करेक्टेड टू 1600 के आसपास, रफली 1620. एंड इवन द लास्ट जो 3 दिन का पुल बैक था उसमें भी हार्डली कोई मीनिंगफुल पुल बैक दिया था HDFC बैंक ने.
और अपने कल के लो के और 2 दिन के लो के नीचे ट्रेड कर रहे थे और करेक्टिव मूव आ सकता है इन एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस इज ऑलरेडी वीक सो एक पेन वहां से ही आ रहा है बिकॉज द टू हेवीवेट्स एचडीएफसी एक्सिस एंड आईसीआईसीआई आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ मूव तो एक relatively देखें तो निफ्टी से बैंक निफ्टी ज्यादा वीकर है एज ऑफ नाउ बिकॉज द इंडेक्स इज लोअर बाय 1% and further weakness cannot be ruled out in bank nifty wherein we can test 48,400 500 today or in the next 1 or 2 days ऊपर में 49,000 is the immediate resistance point और जब तक 4900 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेडिंग पर से ही बात करूं तो करेक्टिव मूव टुवर्ड 48 is weaker to Nifty, but Nifty को भी Reliance ही hold कर रहा है. Otherwise, it is down by 80-90 points. If you remove Reliance, it would be down by another 50-70 points. So थोड़ा सा sell on bounce stance है हमारा, and it would continue. And अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करें इंडेक्स की बात हो गई तो आई थिंक स्टॉक्स में एज सच कोई मेजर आई थिंक कोई रहेगा तो आई डेफिनेटली इंटरव्यू आई थिंक बीईएल इज वन स्टॉक दैट इज ऑन आवर radar and I think I'll quickly share the chart and it is relatively outperforming the index. So अगर किसी को intraday trade setup करना है तो BEL is one stock that is looking good wherein we can buy at CMP and I think we can keep a support of 273 and look for 283 and 285 on the higher side. So BEL is one stock that we can do as an intraday trade setup wherein we can keep a stop of 273 current market price is 277 273 ka stop that is 4 point ka stop and 5 to 6 point ka target for intraday so 283 and 285 ka target ke liye BEL is one stock that we can trade on the positive side which is relatively doing well index is down but the stock is up by almost half to 1%. And given we are nearing the budget, which is scheduled on 1st Feb, तो जो budget related stocks रहेंगे जैसे रेल PSU, रेल budget भी होगा तो रेल PSU stocks we have seen yesterday कि काफी sharp up move था in IRCON, RBNL, IRFC and even Jupiter Wagon for that matter almost 8-9% का move था सब में तो एक budget related का ये play out हुआ कल and even defense related stocks could do well even Masdar, even BEL, which we have suggested for an intraday play today. So 273 के support से look for 283 and 285 on the higher side. Even अगर आज बात करें तो fertilizer stocks में थोड़ा सा एक tick है when we have seen sharp move in fertilizer stocks like FACT. So I'll just quickly share the chart of FACT. The stock is up by almost 4%. I think fertilizers में थोड़ा सा एक action रहेगा. And if you see relatively very good, so I think एक smaller PSU bank में से one stock is on our radar is IDBI Bank. I think IDBI Bank we can do intraday trade as well in IDBI Bank. We can buy at current market price that is 81, keeping a support of 79. We can look for 82.5 and 83.7 on the higher side. Yeah, 84 targets के लिए for IDBI Bank. So after the result of Punjab and Sindh Bank and Bank of Maharashtra, which have performed relatively well, even the NPA levels have come significantly lower. So एक smaller banks में अच्छा action है compared to the other private major banks. So IDBI Bank is one clear setup that is looking good. It's up by 2% and 81 का price है, keeping a support of 79. Look for 82.5 and 84K targets के लिए for intraday. So we have shared two ideas that is BEL on the defense side and small PSU bank in IDBI. So keep these two stocks on your radar. Even fertilizer stocks are doing good, but relatively थोड़ा सा quick move आ चुका है तो we'll avoid as of now. But fertilizer stocks like RCF, PACT, even Chambal, these stocks can be looked at for an intraday person. So IDBI Bank we have shared the levels 79K stocks से look for 83 half, 82 half and 84. And BEL 73K, 273K stops say look for 283 of the higher side. So as of now, these are the setups and these are the trades that we have given. So accordingly, we have shared the index levels as well. So I think we have Anuj
few stock queries, we can take that. अगर बीच में कोई stock अच्छा लग रहा है for intraday or CDI, so we'll definitely share the same. So TVS Motors 2280 put at 65. 220. 2280. Where's your put? Okay, so at the money put लिया है, which is a good thing. So I think TVS में stock का जो 100 का level है 2310 2310 के जब तक नीचे है तब तक I think you should continue to hold your put option. 2310 के ऊपर जाएगा तो ही exit करना, नहीं तो hold कीजिए. I think it can make money. तो 2300 stock का stop दे रहा हूँ 2310. अगर उसके ऊपर चले जाता है तो exit your put option, till then hold your option. Sir, your view on Zomato? Zomato थोड़ा सा ऊपर से corrective move आया है in all the new age stocks, be it PG for that matter. तो एक sharp corrective move from 300 to 288 और 3 दिन में थोड़ा सा pullback आया है और कल ऊपर से वापस selling आई है. तो अगर trading पर से है तो keep a support of अगर आपका लॉन्ग है तो 235 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड लुक फॉर 260. अगर इन्वेस्टमेंट पर से है तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड यूज दिस करेक्टिव मूव टू ऐड ऑन टू योर पोजीशन. अगर इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट आई मीन 3-4 इयर्स का अगर टाइम होराइजन है आपका तो स्लोली स्टेडीली यू शुड डेफिनेटली ऐड इनटू जोमेटो. एक करेक्टिव मूव है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है. तो अगर ट्रेडिंग पर से है तो कीप अ टू स्टॉप ऑफ 235 एंड लुक फॉर 260 ऑन द हायर साइड. अगर investment per se, so I think you should use this dip in Zomato to add into your portfolio. So DLF call Feb 750 at 42. I think DLF आज कल ऊपर से ऑलमोस्ट करेक्ट हो गया था लेकिन आज नीचे से वापस बाइंग आई है 1% ऊपर है स्टॉक. तो आई थिंक आज का सपोर्ट आई थिंक 730 इज द सपोर्ट फॉर DLF. आपका कॉल ऑप्शन है तो आई थिंक 730 के स्टॉक से होल्ड कीजिए कॉल. I think you have bought a good at the money for call option. So I think after our recommendation, I think I've always said that do at the money of stock options rather than deep OTM because you'll आपको टीटा डी के हर्ट कर जाएगा अगर कोई भी स्टॉक में मूव नहीं है. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट यू बॉट एट द मनी. तो 730 के स्टॉक के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. ऊपर में अगर 760 निकल जाएगा तो यू मेक गुड मनी इन DL. Sir, I bought put of Wipro and Infosys. Please suggest target to sell. आई थिंक विप्रो का आज रिजल्ट है तो आई थिंक रिजल्ट प्ले थोड़ा सा एक रिस्की होता है. तो आई जस्ट शेयर आई थिंक पुट ऑप्शन है तो यू डेफिनेटली यू शुड होल्ड ऑन टू योर पुट ऑप्शन. आई थिंक स्टॉक ने एक करेक्टिव मूव और कल का 3 दिन का एक रेंज ब्रेक डाउन दिया है. तो स्टॉक की बात करें तो 288 का स्टॉक सपोर्ट स्टॉप रखिए. 288 अगर उसके ऊपर निकल जाता है. इन्फोसिस का आपका पुट अगर आपने कल लिया होगा तो आई थिंक यू वुड बी मेकिंग मनी. तो मेरी सलाह रहेगी कि आप या तो बुक कर सकते हैं या स्टॉक के 1840 के स्टॉक से होल्ड कर सकते हैं. आई थिंक अगर 1840 स्टॉक कैश में निकल जाता है तो एग्जिट योर पुट ऑप्शन. अगर आपने कल पुट लिया होगा तो डेफिनेटली यू बी मेकिंग मनी बिकॉज द स्टॉक इज डाउन बाय almost 5.5%. तो आई थिंक 1840 के स्टॉप से होल्ड कीजिए इन्फोसिस. अगर आप इफ यू आर मेकिंग गुड मनी यू शुड बुक सम प्रॉफिट. अगर नहीं तो ट्रेड योर स्टॉप टू 1814 कैश लेवल. अगर 1840 निकलेगा तो एग्जिट योर पुट ऑप्शन इन Nifty. For Wipro 288 is the stop. Till then hold on to your put option. Sir, your view on BSE? BSE has been flying almost 4 दिन में. The stock has from 5,000 which has almost crossed 6,000. Almost 1000 पॉइंट का मूव आ गया in last 4 days और आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है. तो आई थिंक वेट फॉर अ बेटर एंट्री पॉइंट. अगर आपका ऑलरेडी लॉन्ग है तो कीप स्टॉप ऑफ 5840 एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 5640 एंड होल्ड. अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आई थिंक आई विल सजेस्ट कि एक थोड़ा सा डिप आता है टुवर्ड्स 5800 और 5750. there you can buy BSE.
एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक मूव आ गया है, तो एक थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है इन द स्टॉक. अगर ऑलरेडी आपका लॉन्ग है तो कीप अ ट्रेलिंग स्टॉक ऑफ 540 एंड होल्ड. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश एंट्री, look for 5800 or 5750 for a better entry point. Sir, Nika 170 call bought at 8.7. कॉल दिया है तो आई थिंक स्टॉक एज सच कोई बुलिश ट्रेंड में तो है नहीं, बट नीचे से रिकवरी आई है. उसका रेंज ब्रेकआउट विल कम ओनली अबव 180. तो अगर 180 निकलता है तो एक फर्दर मूव टुवर्ड्स 190 आ सकता है. बट एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड सेटअप नहीं है. अगर आपने कॉल ले लिया है तो आई थिंक इन द स्टॉक 170 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. अगर स्टॉक 170 के नीचे क्लोज हो जाता है तो एग्जिट कर दीजिए अपना कॉल ऑप्शन. टिल देन होल्ड. अगर ऊपर में आज अगर एक दो दिन में 177 भी निकल जाता है तो एक रेंज ब्रेकआउट आ सकता है इन नाइट का. तो उसके ऊपर एटलीस्ट 5-7% का स्टॉक में मूव आ सकता है. तो कॉल में डेफिनेटली यू विल मेक मनी. तो कीप अ स्टॉप ऑफ 170 इन द कैश एंड होल्ड ऑन टू योर कॉल ऑप्शन. अगर 170 निकल जाएगा तो यू डेफिनेटली मेक मनी, गुड मनी इन नाइका. So view on Hind Copper. I think metal has been correcting, and if we see the weekly chart of the Hind Copper, it is making lower lows, lower highs from last 4-5 weeks. ये week में एक hammer kind of a pattern बना है. I think this corrective move is mainly down to a strong move in dollar index. जो dollar index 103, 105 हुआ करता था, वो 110 हो गया है. So which has a negative correlation with the metals. So which is why we have seen all the metal stock correcting. तो वहां से if we see dollar index as थोड़ा सा cool off हुआ है from 110 to 109. तो I think which is why all the metal stocks have corrected. But Hind Copper weekly scale पे hammer pattern बना रहा है. तो आज का close would be very important. अगर आज का close करंट मार्केट प्राइस पे भी आता है तो नेक्स्ट वीक में आज के हाई, ये वीक के हाई के ऊपर एक पुल बैक मूव टुवर्ड्स 250 आ सकता है. तो आज का क्लोजिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यही क्लोज आता है तो वीकली पे एक हैमर पैटर्न बन जाएगा. एंड अबाउट द दिस वीक्स हाई, अगर नेक्स्ट वीक में ये हाई ट्रेड करता है तो एक पुल बैक मूव टुवर्ड्स 250 कैन नॉट बी रूल्ड आउट. तो आज का क्लोज वुड बी इंपॉर्टेंट. बट एज ऑफ नाउ अगर आपका ऑलरेडी लॉन्ग है तो आई विल गिव यू अ सपोर्ट लेवल दैट यू कैन वर्क विथ. नीचे में 3-4 दिन में कंसोलिडेशन हुआ है तो 225 का एक सपोर्ट है. तो 225 के सपोर्ट से होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग आप हिंद कॉपर. एंड फॉर नेक्स्ट वीक आई थिंक यू शुड कीप एन आई ऑन हिंद कॉपर विद द 1 वीक का ट्रेड सेटअप. सो आज का क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट एज ऑफ नाउ 225 227 का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड लुक फॉर 244 द हायर साइड. Sir, LTM entry can I hold for short term? I think even LTM entry reported results, which is why the stock is down almost 2.5%. थोड़ा सा we have seen earnings का जो भी आता है, I think the stocks have been beaten. Even HCL Tech जिसने अच्छा result दिया, the stock was down 10%. Infosys 5%, Axis 4.5%. So do check with regards to the results. I think result reaction can wipe out many capital. So I think results play ना करे तो that would be better. I think as of now the stock is in consolidation. नीचे में 5600 का एक support है. So 5600 and 5700 is a good entry point with a support of 5500. But as of now कोई trade setup नहीं है. अगर आपका long position है तो 5700 के stop से hold कीजिए. अगर नहीं है तो wait for a better entry point towards 5500 or 5600. Sir, Vikram Kam's Hospitality bought at 69, 2100 shares. I think recently listed है तो and the stock has corrected. Hardly 2-3 weeks का भी data point नहीं है. And after the listing it made a high towards 79-80 and आज almost अपने जितना भी लाइफ स्पैन है उसके ऑलमोस्ट लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है. तो अगर
67 के आसपास. I don't think technically as कोई I can give you a level as such, but अगर 67 जो recent low किया था, 68 है, okay. तो 66 का stop से hold किया. I have no technical point I can share on this, but I'm just going by this low that it has created on 3 days back और वहाँ से pull back आया था. तो अगर वो low break करता है तो I think you should exit your position. That is what I can say. Sir, Bajaj Finserv. In Bajaj Finserv एक strong upmove के बाद it has gone into a strong major consolidation, almost एक week का consolidation है. तो एक अगर 1735 के ऊपर एक strong move आ सकता है. So I think you should keep an eye out on 1735 का level in cash. 1735 के ऊपर जाएगा तो you should definitely enter into Bajaj Finserv. एक almost 100-150 point का move आ सकता है in Bajaj Finserv. So keep a level of 1735 in mind and look to time that move rather than buying अभी, because अगर नीचे में 1650 ब्रेक कर देगा तो ये और करेक्टिव मूव आ सकता है. तो वेट फॉर 1735 जहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड है, स्ट्रॉन्ग मूव 5-6 दिन का कंसोलिडेशन है. तो एक नेक्स्ट मूव कुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज दिस मूव ऑन 2nd Jan. तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबव 1735 एंड वहां से ऑलमोस्ट 5-7% का मूव आ सकता है बजाज फिनसर्व. सो 1735 कीप एन आई आउट. Sir, NH50 quantity at 1315. एनएच ने एक ब्रेकआउट दिया था 1350 के ऊपर, वहां से 1400 से वापस एक करेक्टिव मूव आ गया है, लेकिन नीचे अपने सपोर्ट के पास आ गया है. तो 1250 इज द सपोर्ट जोन फॉर एनएच. तो 1260 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. आई थिंक यू विल सी अ मूव टुवर्ड्स 1350 1370 गोइंग फॉरवर्ड. तो आई थिंक एक रेंज में ही है, कोई मेजर ट्रेंड ऐसा सच नहीं है. एक ब्रेकआउट दिया था लेकिन ऊपर से ब्रेकआउट एक फेल ब्रेकआउट था एंड ऊपर से वापस अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है. तो 1260 इज वेरी क्रूशियल फॉर एनएच. अगर 1260 ब्रेक करेगा तो यू शुड एग्जिट योर पोजीशन. Guys, we'll be taking one last query for the morning session. अगर आपकी queries answer नहीं हुई हैं तो feel free to ask them on Stockhomo. And please note, today at 4 p.m. we have a knowledge session with Arpit Veriwal sir on option strategies. So don't forget to join in. So the last question will be Cochin Shipyard. Okay. Can we buy now? I think out of the three, Cochin, GRSC and Mazgaon Dock, I think Mazgaon Dock is one stock that is relatively doing well. तो अगर आपको शिप डिफेंस और शिप रिलेटेड स्टॉक ही लेना है तो आई थिंक rather than Cochin, I think I'll suggest Mazgaon Dock, which is a better placed and better performing stock. तो I think अगर आपको बाय करना है तो Mazgaon Dock. दो आई थिंक ट्रेडिंग पर से अगर लेना है तो 2200 के स्टॉप से आप ले सकते हैं Mazgaon Dock and look for 2400 and 2450 on the higher side. So rather than going for Cochin, I would suggest go with Mazgaon Dock, which is relatively performing well. So 2200 के सपोर्ट से look for 2400 and 2450 on the higher side. So guys, that will be all. Thanks a lot everyone for joining in. Thank you, Nikon sir. And again, I'm mentioning the same thing. We have two more sessions to go. The afternoon trading session, stock the stock, and the exclusive session at 4 p.m. Option strategies with Arpit sir. So don't forget to join all these sessions, guys. Thank you, everyone. So thank you. Have a good day.